I'm a marathon coach, professional ultra distance runner. I used to be interior designer. I have ran my company for almost 22 years as an interior designer and a contractor. एंड बीइंग अ फिटनेस फ्रिक, मैं करीबन कुछ 10-12 साल का था तब से मैं मार्शल आर्ट सीखता था. इन 2003 वेयर देयर वाज अ फर्स्ट इंटरनेशनल मैराथन हैपनिंग इन इंडिया. सो आई सेड लेट्स डू समथिंग डिफरेंट रादर देन लिविंग अ नॉर्मल लाइफ. एंड फिर मैंने 42 किलोमीटर में पहले ही साल पार्टिसिपेट कर दिया, जो मेरा लाइफ का पहला लॉन्गेस्ट रन था. 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद में मैंने वो रन कंप्लीट भी कर लिया. इट टुक मी अराउंड 3 hours 49 minutes टू कंप्लीट 42 किलोमीटर रन. वहाँ से मेरी रनिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, जिसमें से कुछ रन अगर मैं बताऊं तो पोखरण डिजर्ट में है जो 160 किलोमीटर और 40, 48, 50 डिग्री टेम्परेचर में. देन अहमदाबाद टू बॉम्बे रन किया, देन दिल्ली टू बॉम्बे रन किया. आई एम द फर्स्ट इंडियन हु डिड 100 किलोमीटर ऑन अ वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, खारदुंगला पास. तो वो मेरा पहला नेशनल रिकॉर्ड था. पता तो चले कि ह्यूमन बॉडी कहाँ तक जा सकती है, बॉडी को एक इस तरह के लेवल तक ले जाना कि जिससे आपको कुछ अचीव हो सके, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो सके. कन्वेंशनल प्रोफेशन होता है, आप उसमें आप करते हो, काम करते हो, लेकिन अगर आपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया ना, तो फिर आपको अपने लाइफ टाइम तक कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू डू व्हाट यू लाइक. सो दैट इज नॉट योर वर्क. सो लद्दाख में जो रन होता है ला अल्ट्रा करके, इसमें 3 कैटेगरी है, 111, 222 एंड 333. 111 जो है वो आपको 20 आवर्स में कंप्लीट करना होता है. 222 है जो 48 आवर्स में कट ऑफ में कंप्लीट करना है, और 333 है वो 72 आवर्स में कंप्लीट करना है. अब तक किसी ने 222 किलोमीटर में अप्लाई नहीं किया था इंडिया से. दो 2017 वन मोर फेदर इन माई कैप. सो 2 इंडियंस थे जिन्होंने ये रेस कंप्लीट की, माई सेल्फ एंड सुनील हांडा. तो अगेन ये रेस वहाँ पे ख़त्म हुई. होता क्या है कि एक फिनिश लाइन जो होती है ना, वो हमेशा दूसरे रेस की स्टार्ट लाइन होती है. सो द मोमेंट आई क्रॉस द फिनिश लाइन, व्हाट नेक्स्ट? एंड देन आई डिसाइडेड कि आई विल पार्टिसिपेट इन 333 किलोमीटर ऑल्सो. ये रन पार्टिसिपेट करना एक बात होती है, बट उसके लिए जो आपको ट्रेनिंग, प्रिपरेशन, मेंटल स्टफनेस या फंडिंग की बात करो, या डेडिकेशन या कमिटमेंट, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़, ये सब करना पड़ता है. एंड बस उसकी ट्रेनिंग जब बॉम्बे में लैंड हुआ, उसके नेक्स्ट वीक से मेरी लद्दाख 333 किलोमीटर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई. Okay, to be sensible, no one, as a medical doctor, if you cared about people, all that, sensible doctor, you used to stand at the start line and tell everyone not to do this race. Okay, because it's, as I said, it's a dangerous road. Okay, and hence we have people coming over for 11 days before the race. That's mandatory before attempting this race, because that's acclimatization. You do not land up at 11,000 feet and just start running the second day or the third day.
you're banking on your luck then. I've been putting this race together for last 9 years now. What happens is, what is special about this race is the altitude. So it isn't about the distance. Everyone gets to tie it up where the distance is. Those are random numbers. But altitude is the tougher part here, because we start from around 10,000 feet and then we go up to 70,700 feet, and with the 333 three times over. So the three different mountain passes that we cross. And it's difficult because these things haven't been done before. And besides the altitude, what happens is temperature variation. Within 7 to 8 hours, you could have temperature variation of plus 40 degrees to minus 10 degrees within 7-8 hours. So it's just a lot of things that are there or that are to deal with. So it makes it a very difficult race. 333 करना है तो बहुत टाइम तक मुझे वहाँ पे एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 2 महीने यहाँ पे काफ़ी कुछ ट्रेनिंग की थी, लेकिन हाई एल्टीट्यूड में जाके ट्रेनिंग करना एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है, आपको वो एक्लेमेटाइज करना होता है, उसके चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। 1 अगस्त को लद्दाख में मैंने लैंड किया और 2 अगस्त से मेरी ट्रेनिंग चालू हो गई। ये भी पहली बार हो रहा था कि 333 के लिए 5 इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था। सो 333 के लिए आशीष जो पुणे में रहता है, हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड रनर, अल्ट्रा डिस्टेंस रनर है, और मेंटली बहुत टफ है कि मेंटल अगर आपका स्टेबिलिटी है तो आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। तो यही चीज़ है आशीष के साथ में ट्रेनिंग करते टाइम मैंने सीखी है। How good you are in good mindset or the physical condition at the end of South Pulu or 100 kilometers. क्योंकि उधर पुश करने का है पहला। फर्स्ट 83 किलोमीटर इज गोइंग टू बी रियल पुश बिकॉज ऑफ द कट ऑफ्स, देयर विल बी प्रेशर ऑफ कंट्रोल द कट ऑफ। अगर वो हम लोग हेल्दी पोजीशन में हैं तो देन दिस विल बी लिटिल इजियर, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेट रोड है। सो व्हाट वी प्लान्ड इज 28th, विच इज 20th विल बी गुड फॉर एव्हरीबडी। आपण 2 दिवस इकडे घालवले असू, तो 20th ला आपण गाडी हायर करायची, सगळेजण 7-8 लोक जे येतील ते, आपण इथून गाडी घ्यायची, रूट हा रस्ता आहे आणि सरळ इथे यायचं, हे बघायचं इथे काय आहे, चेक दिस इशू। आपल्याला पाहिजे असेल तर आपण आपले 2 काय शॉप काय होतं माहितीये का, दिवसा आणि रात्री खूप फरक आहे, कारण इथे कुठेच लाईट नाही आहे रस्त्यावरती। मी रात्री बघितलं तर इथे काय झेपतच नाही, कंप्लीट अंधार, काहीच कळत नाही। करेक्ट। त्यामुळे हे आपले मार्किंग आपण बघून घेऊ की काय एक्झॅक्टली आहे, हे करून मग आपण वारीला जाऊ, सो दॅट 1 हाय अल्टिट्यूड फॉर ऑल ऑफ अस, वी गेट यूज टू 1 हाय अल्टिट्यूड अँड वी कम बॅक। K-Top today and planning to do South Pulu to K-Top, which is the toughest part, 15 kilometer, and that part we have to cover it in the night. और ये कौन है? ये क्या मालूम, कोई तो भी पुणे का एक लड़का है। लिफ्ट प्लेयर लिफ्ट। Okay, so this is our first climb to K-Top. In the crew, assisting Raj Vadagama is Hari. Hari, hi. Yes, right now we are at South Pulu. South Pulu is at 14,000. We have come 15,000. So we have come here for acclimatization. And if you see that peak is Khardungla top, which is the highest peak of the race. So right now we are going there for acclimatization, और हम सबकी बहुत खटी पड़ी है। feeling? 17,000 हो गया वैसे. Everyone is feeling it, including the crew. 18th day of acclimatization, and
Today probably will be the last real acclimatization run, and I guess this is the most crucial part which they will be covering from North Pulu to the Khardungla top in the night. Me and Bharat, we are not fully acclimatized, so we are still waiting for, we are not walking with them, we are going in the car. So here comes Raj. Around 9 kilometer हो गया. So you tried to run a bit. How was it? Trying to feel the experience. No, I can't. No, I'm not good at drawing, but I'm very good at drawing. So Raj was doing his Bharathon, and which was basically to do 10,000 kilometers all over India. इंडिया में इतने टाइप के डिफरेंट टेरेन हैं, तो मैंने सोचा कि हम एक ऐसा रन करता हूँ मैं जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया हो। और वहाँ से एक आइडिया आई कि रनिंग 10,000 किलोमीटर अक्रॉस द इंडिया। सो ये रन जो है उसका नाम है भारथॉन 10,000 किलोमीटर रन, और 15 अगस्त 2014 को ये रन स्टार्ट हुआ था। बॉम्बे से लद्दाख, लद्दाख से वेस्ट बंगाल से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से बैक टू बॉम्बे, और रन ख़त्म हुआ वो 26 जनवरी 2015 को। First time I heard there is somebody who is doing 10,000 kilometer run across India, and I said I am going to support this man whatever possible way, and that's what first time I heard about Raj Vadgama, and we decided to go at the start point at Gateway of India on 15th of August. And then one day Hari called me and he said let's go and support Raj. So we joined him in Punjab, and from Punjab till Himachal, till Manali, and till Leh and Khardungla and all that region we were with him. That was the time when there were floods in Srinagar 2014. So he had almost given up the Ladakh leg, and that is when me and Arvind joined him, and we were with him around 2 to 3 weeks. And that's when I hit off with him, and I had the privilege of running with him for around 200 to 300 kilometers, which was only me and him. So it was good listening to his stories, his experiences. And when the moment he said that he's going to do 333, I just jumped in. So I'm really looking forward to the 3 days of excitement or madness, or whatever you want to call it. Here at Khardungla top, all set for 333 kilometers. Shankanath. Come on. Very good. Not good. Okay, so we are here at Khardungla top, 18,000 feet above sea level, 50% oxygen. These guys came running, covering the elevation of 11,000 to 18,000. And we are told that we can't stay here for longer, otherwise we'll start getting headaches, so we're going down.
This is last leg of training where we are at Warila Pass, which is at around 17,200 feet above sea level, and this would be the second peak that the runners would be covering for 333. So Raj had got in touch with me during the second edition or the third edition, and I just thought he wasn't ready for it. And I'm very clear about it. I do not let people in if I think they'll not be able to finish it. Not that I let them into all of them finish it. That's not the point. But at least they should possibly, have something in them that they can possibly get to the finish. And it was for 2-3 years or more that, we back and forth, those messages going, and, I would like to listen, no, not yet. And he had done amazing things. He had run 10,000 kilometers in Bharatan and, all that stuff. And then he came last year, he did 222. And this year is attempting 333. And that's amazing because it's yet again that same thing about failure is not a crime, lack of effort is. And he's a great ambassador to ultra running, someone like him. I'm a physics teacher, by profession, and I've been involved in running and adventure sports, mountaineering sports really ever since I was a small child. Ultra running in particular for the last 20 years. So I've taken part and competed in many 100Ks, 100 miles, and some of the biggest and most prestigious races in the world. So I've taken part in Badwater a couple of times. Finished Spartathlon 3 times, and the race, which is probably my favourite race, is L'Ultra, the High in India. Which I've finished the 333 version. Mark Willie has done 333 3 times over. First time he attempted it, he was the first guy leading the race. First edition we were having of 333, and he was just short of the finish line by 16 to 17 kilometers, and he still had 4 hours. And all systems just shut for him because of hypoglycemia in the cold, and a couple of things just coming together, and some wrong decisions made, silly small wrong decisions made. Then he came the year after that. He took a little longer than whatever the cutoff was. And then he came the third year, and that's such spirit of L'Ultra, because failing is not a crime, lack of effort is. And that's beautiful, because then he came, he finished, he trained to do that. Hands up! Everyone, hands up! Okay, hands up, everyone. And I wanted to give a trophy to anyone who is standing at the start line. They have the guts to be there, okay? So please just make it easy on yourself. I understand you're putting enough time, money, effort, all that stuff. I think in today's society, the biggest problem is, I think everyone's succeeding way too much, okay? We need to fail once in a while in life. And they start appreciating life a little bit more. You make a wrong decision, one wrong decision, the race is over. The tricky part about this race is, you make one wrong decision to Nessa. Totally. When you're at a higher altitude, your body is very clear. It's just who wants to stay alive, and that's about it. Okay? So if at Khartoum, imagine you're there, your oxygenated blood is rushing to the brain to keep you alive. Okay? You start moving, it's actually rushing to the muscles, because muscles use a lot of oxygenated blood. Okay? Now when you start eating while you're walking or running, the body is saying, now make up your mind, do you want to stay alive, do you want to run, or do you want to eat food? Right? What I'm suggesting is, when you are actually wanting to eat something, either slow down or actually sit down and have that. So we keep saying it again and again, hydration. If there is dehydration, it adds to high altitude sickness as well. There's fatigue, there's high intensity workout that you're doing. Listen, it's a recipe for disaster, the whole cocktail of it. Okay? So please take care of that. You are on a road which is active, all right? Road traffic accidents, probably more common than other things that you're talking about, okay? Please take care of yourself. I like to be on the wrong side of the traffic. I just like to know which car hit me when I have to fill that form upstairs. Okay, it was a red car. Be prepared for very hot, be prepared for very cold, because it will happen, okay? And it'll happen in a very short span. You'll be surprised the 4 kilometers initially are this much,
And you'll notice as the time is going on, those 4 kilometers are getting longer and longer, right? 333 किलोमीटर आपको 72 आवर्स में कंप्लीट करना है, ये अलग बात है, लेकिन पहला 21 किलोमीटर जो है वो आपको 3.5 घंटे में करना है। उसके बाद दूसरा 21 टू 40 किलोमीटर जो है, अगला 20 किलोमीटर वो आपको 7 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, लेकिन यहाँ से अल्टीट्यूड चालू होता है। सो अगर आप रन स्टार्ट करते हो लांगचून से जो 10,000 फीट अबव सी लेवल है, सेकंड 12,000 पे आता है, फिर 15,000 पे आता है, चौथा है खारदुंगला पास, वो 18,000 पे आता है, फिर खारदुंगला पास से आपको नीचे की तरफ जाना होता है, साउथ कुल्लू की तरफ। डिफिकल्टी लेवल क्यों होती है? पहला 87 किलोमीटर तक आपको कोई क्रू नहीं होता है, आपको ये रन जो है सेल्फ सपोर्टेड कंप्लीट करना होता है। 87 किलोमीटर के बाद आपको आपकी पर्सनल कार मिल जाती है जो आपके क्रू के साथ में आएगी। आगे वाले भी पीछे वाले। Thank you everyone. Okay, sir. Again, people who are running it, 333, think about North Pulu, think about Khardung village. Don't think about how is it going to be at 222. Okay? You get that wrong, how you can carry on. First step first, right? Everyone who has not finished this race ever, they were thinking far too ahead. I think let's have a couple of plans, like 2-3 plans in place. I can guarantee one thing, that plan A is not going to work. It is going to fall apart, right? Just be prepared for that. नहीं तो 6 पर आ गया। नहीं 36 तो पता हो गया। इसके अगला एक्चुअली क्या कैसे करने का है, इसको 3 में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ अभी चेक पॉइंट कौन सा है? सीधा ये डायरेक्ट हुआ है ना। 1 घंटा ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ नहीं बराबर है का 3-4 किलोमीटर थोड़ा टफ है, स्लो ही जाऊँगा चलूँगा, बट फिलहाल 10 लगते हैं। Any race, ultra marathon crewing is an experience, and as a crew you have a very tricky work, in the sense one side you have to take care of the runner, you have to make sure that the runner gets the whatever best possible support, and there are calculations where where you have to be always alert, how much time left in hand, how much distance is done. अगर हम 2 बजे निकल रहे हैं ना, ये तो आपको 2 घंटे में खत्म होगा। 10 इंक्लूडिंग रेस्ट पकड़ता हूँ। चलो ये कच्चा, ये पहले वाला है ना, वो ठीक हो गया। फिर तो हम सबको भागना पड़ेगा आपके साथ, तांगलांगला से नीचे सब भागेंगे। अब तो ड्राइवर सिर्फ गाड़ी में रहेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो हरी का एक चीज़ बहुत परफेक्ट होता है, उसका कैलकुलेशन, कितने टाइम में कहाँ पहुँचना है, तुम्हारा पेस स्लो हो गया है, तुम्हारा पेस बढ़ गया है, कहाँ तुमको रेस्ट करना है। सो दैट इज़ हरी मैनेज वेरी वेल। Basically play with the runner's mind. You have to keep engaging him. As a crew member, it's also a lot of patience, because in ultra races the speed really goes down. I mean, and especially on the high altitude, at times there are baby steps. At times I feel the running is easy but crewing is tough. अरविंद के साथ में मैंने 2017 में 222 रन किया था। वेरी वेरी पीसफुल गाय, एंड ही मेक्स यू वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ चैलेंजेस। मेरा सोचना था कि ये जो अपने लास्ट टाइम यहाँ ब्रेक लिया था ना, वो अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो। लास्ट टाइम मेंटली कितना बहुत हो गया था, मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ऐसी थी कि 5 क्रू मेंबर और फाइनली राज अकेला, कोई भी क्रू मेंबर नहीं, ऐसा सिचुएशन था। बट इट वाज इंटरेस्टिंग। साउथ पुल से अपन नीचे भी काफी स्लो हो गया था, क्योंकि वो इसका हो गया था, उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, वो सब इंद्रजीत का उसका 40 ऑक्सीजन लेवल 40 पे गया था। अरे मतलब एक का भी हुआ ना तो सबको प्रेशर आ जाता ना यार, सबको प्रेशर आ जाता है। वो भी बहुत स्लो कर लिया। 333 में कितने लोग? 5 तो इंडिया मतलब ना। So that the first, whoever finishes this year would be, the first Indians to be doing it. It's considered easily as one of the toughest races over years, over the last 2-3 years. Red Bull, when they come up with a list of the toughest races in the world, we've been there, whether it's been 7 races or 9 races or something.
It's Chupan threes are crazy, man. Badwater was also another one of my favourites in the United States, which is a race that crosses Death Valley. Okay, it's the hottest race on earth. That really pushes your body to a physical extreme because you have to manage that heat. In fact, it's so intense that you can't do it without external help. There's you have a support team, they keep you cool, throw water on you, put ice around your head and things like that. So, but you're running in literally sort of like 54, 55 degrees centigrade. That's quite a challenge. Spartathlon is another one of my favourite races. Okay, very, very physically demanding race. 246 kilometres to cover in 36 hours, and it traces the steps of Philippides. Okay, who delivered the message from the Athenians to the Spartans. Okay, they were under attack from the Persians, and so Philippides ran from Athens to Sparta to ask for help from the Spartan king and the Spartan army. Okay, and according to history, well, that took place from the first light of one day to the last light of the next day. Okay, 36 hours. And certainly here in La Ultra in India, up until about the distance of the 222, it's a very physical thing. It's not such a mental thing. And then when you cross that barrier between 222 and 333, then the psychological aspect becomes really, really important. And it's no longer a physical barrier, but a psychological one. So you're at 5,000 meters, not enough oxygen, and you start to hallucinate, and you don't really know where you are. You know, and it's a real mind game trying to keep it under control and things. I found that aspect of the sport very interesting. Good morning, it's Raj Vadgama here, and we are at Leh, and today we are going towards Nubra Valley, where the run will start, and tomorrow 6 p.m. actual run will start. And I am very happy to introduce my team member Arvind from Pune, Arvind and Hari will look after everything, all logistic, and they will be the main pillar of this run. And Adil is going to do 111 kilometer, and after that he will start screwing. All these three I will be screwing Raj Vadgama. Thank you. So that's what this is. Yeah, I've just divided my staff like till South Polo and after South Polo. Any other recommendations, Martha? Yeah. Konnichiwa. मेरा नाम सातो अरे फिर इनको हिंदी आती है बात करते हुए. We have Rochi Sato here. He's how many times Spartathlon? 8-time finish. 8-time finisher of Spartathlon, and a legend runner from Japan. And it's a fortunate for us to be him here. Just listen to your own body. It's by far the best indication of how you're doing. If you feel good, push. If you don't feel good, just reel it in a little bit. And if you don't feel good, and things are starting to get out of control, and you're thinking, oh my God, I've told all my friends back home I'm going to smash the 111 record, then you will fail, okay? And you'll fall onto the floor and you'll make a complete mess of it, okay? So really listen to your own bodies. It's really important. And put your egos just over to the side for the duration of the race. Yeah, your ego will kill you, all right? It really will, all right? It's a bad thing to have hanging around when you're doing something like this, okay? Can I ask you a question? Some small piece of advice about the post-run recovery. About post-run recovery. Post-run, lots of beer, okay? All right. So we are heading towards the starting point, and we just crossed Khadungla top, and we are stuck here because of traffic. Some road work is underway.
That's the race route in front of us. The starting point is about 76 kilometers in that direction. Right now the altitude is above 17,000 feet and even breathing is a task. Okay, Hindi, English can be practiced. We are at this Spirit camp, which is where the race is going to start. The start point is 8 kilometers from here. We'll be doing the crewing duties, and Adil probably will be pacing Raj wherever required. Pacing is typically required when there is downhill where you can gain some time, and that is when if the runner has a pacer who's just leading him, then it becomes easier for the runner to just follow the pacer and cover distance in the stipulated time. We are really all excited, and the crew will go back to Leh and join Raj at South Pulu in the morning. The cutoff is 11, but we are expecting probably 1.5 hours earlier. So we will be there by 9 at South Pulu to start the crewing duties. एकदम चलो. Cool, everybody. Loading in 15 minutes. Repeating again, we're loading in 15 minutes. Let's all be a normal family. All the best. Right, no problem. Yes. All the best, sir. All the best. Here I am at the Nubra Valley at the starting line of 333 kilometer La Ultra the High. Preparation is throughout the year is good enough, but God knows क्या होता है आगे चल के. But we'll try to do our best. So, I'm Ashish, participant of 333 kilometers in Ladakh, La Ultra. I'm Commander Sunil Handa, Indian Navy. Yeah, that's a great feeling, and hopefully all 5 of us complete very well and strong. I am Mandeep, I'm from Gurgaon. And 333, obviously we would be the first Indians, and it's an honor to run along with 5 of the colleagues. And it's a chance to make an history, and we feel proud of ourselves. My name is Manish, and I am from Delhi. Confident हूँ और कर लूँगा इस बार. 333 will be completed. Yeah! You can't live same life 365 days. You have to have. You are not born to pay light bills and telephone bills. So when you go back home, you should feel nice about yourself. So just enjoy yourself and enjoy whatever you're doing, and follow your dreams. So big cheers, all the best to all of us. And we will do it together. Thank you so much, guys. Thank you. Good. Three. भारतीय जनता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की. 5 minutes, guys. 5 minutes. इतना नक्की कहूँगा कि टेंशन नहीं था रन का, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हो और आप प्रैक्टिस करते हो तो आप मेंटली टफ हो जाते हो. और कई बार रन कर चुका हूँ मैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं था कि क्या होने वाला है.
रन स्टार्ट हो गया एंड 21 किलोमीटर जो आपको 3.5 घंटे में करना है 2 hours 50 मिनट में कंप्लीट हुआ। उसके बाद में जो 40 किलोमीटर जो है वो करीबन 7 घंटे में करना होता है, वो 6 घंटे में कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आप नॉर्थ पुलू गया, फिर खारदुंगला पास गया। ये एक एक करके जो कट ऑफ टाइम थे ये आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा पहले कंप्लीट होता गया मेरा रन। So we are all set. We are Arvind, me and Arvind. No, Bharat bhai. The car is all loaded with water, bananas, whatever we need. We are heading towards South Pulu. It's 8 a.m. now. So we have left Leh 5-10 minutes back, and we probably will be reaching South Pulu around 9 a.m. That is the time when Raj is expected, maybe sometime between 9 and 10 a.m. And that's when the real crewing duty starts. Going, guys. Keep it up, keep it up, keep it up, keep it up. Yeah, Jason. Good one, Jason. Jason, keep it up, keep it up. Good going, sir. Keep going. We are also hoping that the toughest part of the race, in terms of technical challenges, would be over, and from there on, it will all be mind game. And I am sure, with some experience behind of doing 222, we should be able to go through it. He needs to talk. आइए सर, This is 24th August, Friday. It's 9 o'clock. We are waiting at South Pulu for Raj. As per the organizer, 7:30 he crossed the K-top, which is like 30 minutes before the cutoff. Here the cutoff is at 11 o'clock, kind of a critical cutoff, and then from there we'll go to Leh. क्या बात है, क्या बात है? Good luck, sir. All the best, sir. Thanks. आ गया राज आ गया। राज गो राज गो। जैसे ही साउथ पुलू पहुंच गया, वहां पे मेरी टीम देखी। एक बार टीम सामने नजर आ गई, फिर आप सरेंडर कर देते हो। तो सरेंडर करना मतलब क्या होता है कि देन यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट एनीथिंग, यू विल जस्ट फोकस ऑन योर रनिंग ओनली।
चाहे वॉकिंग या रन करना है, एक पैर दूसरे के आगे, दूसरा पैर तीसरे के आगे, ऐसा करते करते आपको एक डिस्टेंस एक फीट एवरी इंच, एवरी मीटर, एवरी किलोमीटर आपको कंप्लीट करना होगा। एक बार तो लगा कि क्या होने का, गड़बड़ होने वाली है क्या, क्यों सेट ऑफ पे क्या हो गया, टेंशन में आ गया, बोला अरे आ ही नहीं रहा, but then we reach 15-30 minutes. Oh, fantastic. The high altitude, basically it's the lack, well, you've got two things. You've got the lack of oxygen and you've got the lack of air pressure, okay? So the lack of oxygen obviously limits how much energy you can process. So typically a high altitude race, you have to slow down, all right, simply because you cannot perform as well at sea level. Now, if you're an athlete that you're expecting to run at a certain speed, well, you can't maintain that speed at altitude because you haven't got the oxygen that will allow you to do that. And the other is the air pressure, which you have to be very careful of, especially if you're somebody that lives normally at sea level, because your lungs expect to feel 1 atmosphere of pressure pushing back, and a typical athlete is capable of generating a very high blood pressure during activity to pump all of that blood around the body. And of course, what can happen is that the tissues on your lungs are not fully adapted to this new environment, which is very dangerous. Okay, it leads to pulmonary edema. So there's a real element of high altitude sickness, high altitude problems. So you have to consciously rein yourself in when you're running at altitude. And maybe you've got somebody that's coming up behind you and you're thinking, oh my God, I'm losing a place. Your focus has to be on yourself. You have to be thinking, right, am I overstepping that line? Because you overstep that line and you're out, you're finished, you're not going to go anywhere. It's a game. It's very dangerous. Okay. Hi, Raj sir. जैसे नीचे उतरा, दोपहर तो बहुत धूप होती है। अगर लद्दाख में आप देखो कि दोपहर के टाइम पे यू आर क्लोजर टू द सन से ऑलमोस्ट 12,000, 15,000, 18,000 फीट। सो आपको सन का हार्शनेस वहाँ पे बहुत लगता है। तो इफ़ यू आर इन अ ओपन एरिया व्हेन सन इज देयर, इट विल बर्न योर स्किन। शेडो में जाते हो आपको ठंड लगती है। ये हमेशा डिफिकल्टी होती है।
हमेशा जब सब क्रॉस करते ना इनको, ये जब कुछ बोलते हैं ना, उसके बाद एक थोड़ा 100 मीटर आगे जाके रुकने का, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है उनका। और कुछ चाहिए? 95 डन सर। ऑसम। So here we are, and this is 1 o'clock, and the first 100 kilometer done, and we are 11 kilometer away from the Shanti Stupa, which is a 111 point. See the greenery there? So now we are back to the civilization. Awesome, awesome. क्या चाहिए? ब्रेड, चीज और मिल्क ले लेगा। क्या बात है हरी सर, गुड कंपनी। हरी ने साउथ पुलू से चार्ज ले लिया था। हरी के साथ में नीचे उतरने में कंफर्टेबल ही हो गया। हमने कई बार रन 10,000 किलोमीटर में भी साथ में किए थे, तो वो एक कहीं ना कहीं उसके साथ में बॉन्डिंग थी। तो हमारा फर्स्ट कट ऑफ जो एक मेन जो था कि लेह में पहुंच के शांति स्तूपा में पहुंचना है, जो 111 किलोमीटर और 24 आवर्स का कट ऑफ टाइम था उसका। At Shanti Stupa, 111 done, 1/3 of race is done. Was a time now 3 o'clock, so we are 3 hours before the cut-off time. This year, if you remember last year, so we are doing fantastic, I think. Awesome. Yeah. क्या करना है, ऊपर जाना है, ऊपर का एक चक्कर लगा के आना है सर। गुड जॉब, गुड जॉब।
compared to the last year, Raj was 3 hours before at the 87 kilometers. So that way, he was doing great. Even at the 111 kilometer, he was looking strong. We were much earlier compared to the last year, the 222 kilometer race, and we all were delighted that we have good time in hand. जब पता है आपके पास 4 घंटा पहले पहुंच गए तो हमने सोचो डिसाइड किया मैंने कि 2 घंटा रेस्ट किया जाए। गलती कहाँ पे होती है या आप अगर बोल सकते हो कि जैसे बाथरूम में गया मैंने नल चालू किया तो बहुत फोर्स से पानी आया और वो पानी जो है मेरे बॉडी पे आया। अब पिछले 20 घंटे से अगर आप ऐसे कंडीशन में रन कर रहे हो और आपके ऊपर इस तरह का ठंडा पानी जब गिरता है तो कहीं ना कहीं एकदम बॉडी शिवरिंग करने लगी। तो मैंने बोला अरविंद को एक काम कर बॉस, आप मुझे कॉफ़ी बंदोबस्त करवा दे। तो वो कॉफ़ी का बंदोबस्त करने गया एंड मैंने सोचा तब तक मैं रेस्ट कर लेता हूँ। नहीं प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द वीक चाय पी रहे थे, जल्दी कवर किया ना बिना रेस्ट के। फिर कॉफ़ी पिए, 2-4 बिस्किट के, 2 चम्मच राइस खा ली और फिर हम लोग ने हमारी नेक्स्ट जर्नी के लिए निकल गए। चलो गुड, आ जाओ चलो 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 अभी दूसरा गणपति बाप्पा मोरया। We have reached Hall of Fame and Arvind and Raj are walking towards the Hall of Fame. We have just stopped here to wait for them. But looks like there is plenty of headwind and especially in that area it is the tank storm coming up. So it's going to be pretty challenging. And as if the extreme heat in the day was not enough. In fact, we were looking forward to a decent evening when we could take up some time, but looks like challenges are not over yet, and let's see how it goes through here. हाँ विंड जो है हाँ स्लो कर देता है आपको। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जब मैं और अनिल डिस्कस कर रहे थे तभी 10 मिनट वर्कआउट के बेस पे वॉकिंग करो या रन करो, ये तो 10 भी बिगाड़ देगा। 10 भी बिगाड़ देगा। एनर्जी ज़्यादा जाती है। हाँ फ्रेश। We don't want to push hard now for next level. We'll walk. Just take it easy. Don't want to exert too much. We may require last. When I was walking and running with Raj, I was wearing a normal t-shirt and a simple jacket, and what I saw is Raj was wearing three layers, and he was still shivering. That time he had done around 140 kilometer, and someone who has done that much is continuously running on the road. That person doesn't feel cold. So I was feeling there is something going wrong.
घंटे से याद नहीं करूँगा बात, इसलिए पहले बोल रहा हूँ। मैं काफ़ी जैकेट पहन के रन कर रहा था क्योंकि ठंड लग रही थी और थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी, बुखार जैसा लग रहा था, बॉडी पेन कर रही थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, खींच लेंगे, ये तो पता था कि होना ही है आज नहीं तो कल। ऐसे रन में हमेशा इस तरह के सिचुएशन आते रहते हैं आपको, तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि अब करें क्या। आपको माइंड को कंट्रोल करना है, बॉडी को कंट्रोल करना है, एंड देन यू हैव टू फिनिश योर नेक्स्ट गोल। तो 333 किलोमीटर कंप्लीट करना ये तब गोल नहीं था, अगला 1 किलोमीटर में कैसे कंप्लीट करता हूँ उसके ऊपर फोकस रहा। हमारा नेक्स्ट कट ऑफ जो था वो अब बहुत लंबा था, जो शक्ति में आपको 38 आवर्स में कंप्लीट करना था। तो मेरे पास बहुत टाइम था, तो टाइम का अब टेंशन नहीं था कि ये टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। Adil, who was supposed to do pacing with Raj, and because Hari already did the South Polo to layer pacing, and Adil was supposed to join, but I think Adil, after finishing his triple 1 kilometer, he was not feeling well, so he couldn't join us. So again, it was only me and Hari. Baton handover. Belt. आप हो? Okay, here we are at around 135 kilometer mark. It's very windy, it's cold. I don't know whether you can see in the camera, there's a Leh city. We crossed the entire city and now we're heading towards the Warila pass. And so far, so good. गुड वन, गुड वन। क्या बात है सर? वैसलीन दो ना। 173 स्टेशन इज अवर 8 o'clock in the morning. 11 घंटे अपने पास। Around 4. कारू कितना किलोमीटर है यहाँ से? कितना है? 35 ना? छिल गया है सारा पूरी पिछवाड़ा। तुम कितने दूर आके रुके थे? 2 किलोमीटर। इतना लंबा होता है 2 किलोमीटर? तू बोला ना 2 किलोमीटर। शॉक ट्रबल कर रहा था, ब्लिस्टर आया हुआ, उसके पहले वाला चेंज कर लिया। अब जब इस तरह के डिस्टेंस रन करते हो तो यू स्वेट अ लॉट। जब स्वेटिंग होता है तो साथ में सॉल्ट निकलता है, एंड ये समझ में आ गया था कि दोनों पैर के बीच में रैशेस स्टार्ट हो गए। तो ये जो हमेशा होता है, ऐसा कुछ नई बात नहीं थी कि ये पहली बार हुआ है, तो ये हमेशा होता है। एंड रन तो कंप्लीट करना ही था।
गया क्या? क्या गिर गया? थोड़ा करीबन रात को 1:30-2 बजे का टाइम था और बहुत शिवरिंग और बुखार हो रहा था। देन मैं आधा घंटा सोने के बाद में एक पेन किलर ले ली मैंने, ताकि एटलीस्ट बुखार कंट्रोल में रह जावे। फिर आगे कंप्लीट करते गए। ये जो रैशेस जिसको मैंने बहुत मामूली समझा था, वो करीबन सेरती के पहले 7-8 किलोमीटर पे मुझे इतनी तकलीफ होने लगी कि आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल कि एक पैर भी आगे रखूं, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन आई स्टेप अहेड और वो पेन होता था। तो कंटिन्यूस ऑइंटमेंट लगाओ, हर 15 मिनट के बाद ऑइंटमेंट लगाओ और फिर वापस वॉक करो। रनिंग तो दूर की बात थी। अब I think because of the fever or because he was wearing so many jackets, his whole form has changed, and I think that leads to the shopping, because I've seen Raj running 70-80 km every day in Marathon. I've seen him doing 222 km comfortably. So there is no way before 222 km Raj is going to feel anything. But from 140 km to 160, that 20 km took a lot of time, because he had shafting, he has fever, his entire stance is changing. I remember he was bending at one side and he was walking, and the speed really gone down. गर्म पानी भी नहीं आता रहेगा, नहा लेता हूँ। मेरा काला बैग में है कि नहीं वो स्विमिंग वाला बैग? आपके काले बैग में? हाँ, आपको पूरा सामान लाया है। इतना जलेगा ना, नहाएगा तो इतना जलेगा ना। पानी चाहिए सर? Can you do it or can't you do it? And then it's not, like I say, it's not a physical thing anymore, it's a mental thing. You know, you're sleep deprived, all you want to do is lie down and go to sleep, you know, and you're not even sure whether you're asleep or you're awake. You're not really conscious of where you are. You know, do you still have that mental control to keep control of stuff and keep it on track? You know, it's an interesting game, you know, okay, all right. Maybe many people wouldn't understand that, but I think ultra runners that get into the very, very, very big distances find that aspect
interesting. It's and very satisfying when you do it. सो शक्ति में करीबन 8 बजे का कट ऑफ टाइम था. We were the last one to reach at Sarthi. Very cut to cut we reached there. पहुंचने के बाद में रेस्ट करना नहीं था क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, क्योंकि जितना जल्दी हो सके सेकंड माउंटेन जो था वारीला पास वो ख़त्म करके जब नीचे उतरेंगे तब डिसाइड हुआ था कि हम 1-2 घंटा रेस्ट लेंगे. आई टुक अ शावर, आधा घंटा नैप लिया एंड देन वी स्टार्टेड अगेन. We are the last one, sir, but we'll catch up with everyone. Chalo sir, let's go. The speed was really slow because that Shafing was troubling him. He was still not recovered. He still had a high fever, and the way he was bending and walking, I told the team, boss, I haven't seen Raj struggling like this. रास्ते में मैंने अपनी शॉर्ट्स चेंज की, कहीं एक मंदिर के पीछे जाके बहुत सारे तरीके के मैंने दूसरा ऑइंटमेंट लगाया, फिर वहाँ पे टैपिंग किया. Normally the runner is the one who decides that he tells the crew that it's not looking good. He said, but not even once he said. And you don't want to tell your runner that it's looking difficult, because that's not the role of a crew member. You have to basically motivate him. You have to tell him that it is possible. ट्राई करते हैं सर. हम ये मान के चलते हैं कि 6 बजे अपना कट ऑफ है. 6 बजे इज़ द फिनिश. ओके, एंड लेट्स गिव इट अ शॉट. डॉक्टर जी का क्रीम है ना ऊपर? सॉरी, हाँ है, मंगा लेता हूँ, अभी आ जाएगी. Knowing Raj that he has so much of willpower and his temperament is so good and is so determined and so much of experience, I'm sure that he will be able to finish. But is it worth it? Do you want to take that risk? 8 घंटे का टाइम बचा था वारीला पास पहुंचने का, ऊपर पहुंचने का. 7 घंटा टाइम था अभी हमारे पास. 7 घंटा करीबन 30 किलोमीटर जो करना है, लेकिन 30 किलोमीटर वो अपहिल था, जो 12,000 फीट से लेकर 17,000 5,000 फीट ऊपर तक जाना था. एंड हरी ने फिर एक बात की, एक काम करते, अगला 3 किलोमीटर कितने टाइम में आपसे कंप्लीट होता है, लेट्स सी एंड देन विल टेक इट. हमें ऊपर पहुंचना है ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे. देन आई स्टार्टेड अगेन क्रीम लगाया, ऑइंटमेंट लगाया. एक किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो मुझे 20-22 मिनट लगे करने को.
देन कहीं तो डर लगा। अब पहली बार मेरे को इस तरह का डर लगा कि मैं अपनी लाइफ में फेल हो गया। देन आई स्टार्टेड ब्लीडिंग। इतने साल तक इतने रन कर चुका हूँ, यहाँ पे ही ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, सेम डिस्टेंस का रन कर चुका हूँ, लेकिन ये क्या हो गया आज। एंड आफ्टर ऑल ये हो गया कि माइंड को कितना भी कंट्रोल करो, बॉडी ने गिव अप कर दिया। अगर बॉडी ने गिव अप किया है तो माइंड के ऊपर असर होने लगा है। अगर मैं इस तरह की इंजरी लेके अगर कंप्लीट करूं और अगले 6 महीने तक कुछ नहीं कर पाऊं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एंड further damaging our body and pushing hard is not a good choice. So it's always better to control your mind. मन को ना चाहते हुए भी मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि दिस इज़ द टाइम, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई हेल्थ, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, क्योंकि मर के कोई जंग नहीं लड़ी जाती है। अगर आप जिंदा हो तो नेक्स्ट जंग की तैयारी कर सकते हो। So yes. Thank you. तो देन सभी लोगों का मूड ऑफ हो गया, सभी लोग निराश हो गए कि इतनी मेहनत की है, इतना हमने स्ट्रगल किया है, लेकिन वेरी हेवी हार्टेडली वी टुक डिसीजन टू टर्मिनेट द रन, टू क्विट द रन। तो दैट वाज अ टाइम 178 किलोमीटर पे आई हैव टर्मिनेटेड माई रन। तो फिर अभी रेस कब तक करना है? हाउ लॉन्ग यू थिंक यू विल रेस? रेस लाइक दीज काइंड ऑफ रेसेस मरते दम तक करेगा।